Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the complex numbers, some very important points, that is polar and Euler formula. In the previous video we have discussed about the concept and some questions related to complex number. Here the full video that will be on the topic, that is polar form and Euler's formula. Students, polar form, or you can say the modulus amplitude form or the trigonometric form. These three are the names for the same one, right? Polar form या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ जाए तो इसमें हम सेम ही करते हैं. सो फॉर दिस वी नीड अ जेड. आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई. जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं. वन दैट इज x विच इज कॉल्ड द रियल पार्ट, राइट, एंड y विच इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट. जो ये इमेजनरी पार्ट होता है उसके साथ हमेशा हम आयोटा आयोटा लगा के रखते हैं, राइट. व्हाट इज दिस आयोटा? इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस इट. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, राइट. Now z equals to x plus iota y, it is a complex number denoted by, इसको मैंने denote किया किससे? P of z. It equals to x comma y. What are these value? X is real and y is a imaginary part in the Argand plane, right? Now in the Argand plane, if we consider, we will take the two axes. One is x-axis, another one is y-axis. In this, we are taking complex number with the point x and y, right? Real part and imaginary part. So we here represent this p, x and y, right? Now OP, O with the p, like this will give the magnitude, right? The OP value we can find, it is equals to magnitude of z, right? And modulus of z, you can say. So how to find out the modulus of z? It is under root of x square plus y square. If we have here z equals to 3 plus 4 iota, right? So how to find out the modulus? It is under root of real part square, that is 9, imaginary part square मतलब 4 का square 16, and this is under root of 25, it is equals to 5, right? So here they are taking value z with x and y, real part and imaginary part. Now we will take x square plus y square under root, and this value we denote it by r, right? Now OP, from this P point we draw a perpendicular on the x-axis. Now angle XOP we consider equal to theta, and this theta will give you the amplitude of z, right? Modulus, that is r, and amplitude, that is theta, right? Now we have this value p of xy. So this value is equal to x up from this to this distance, and this value is equal to y, right? Angle made by this position vector, that is equals to theta, okay, and this is the amplitude of z. So now from figure we can find out cos theta. What is cos theta? It is base divided by hypotenuse, right? Okay, we have learned the formula. It is Pandit Badri Prasad हर हर बोले सोना चांदी तोले. So if we want to find out cos का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. थीटा के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, राइट? तो नीचे वाला क्या बनेगा? बेस. ये क्या बनेगा हमारा? हाइपोटेन्यूज. तो यहां से x बाय आर किसके इक्वल आएगा? cos थीटा. तो x comes equals to r cos theta. And y by r. What about sine? Sine it equal to perpendicular by hypotenuse. Sine theta is equal to, it is equals to y by r. Perpendicular by hypotenuse, y by r. So here now x equals to r cos theta, y equal to r sin theta. X plus iota y equals to r cos theta plus iota r sin theta. Take common r, we get cos theta plus iota sin theta. Above second is called, this equation is called polar form. What we call this? Polar form, or you can say modulus amplitude form, right? Now
Cos theta plus iota sin theta, we can denote it by cis theta, right? Cis theta means cos plus iota sin theta, right? So somewhere in the upcoming videos you can see here cis theta. What it means, वहां पर क्या लिखा होगा, cos theta plus iota sin theta, right? Now cos theta plus iota sin theta is equal to cis theta. Observe that cos of minus theta plus iota sin minus theta is equal to cis minus theta, right? Okay, so cos theta minus iota sin theta equal to cis of minus theta. For example, here if I am taking cis of minus theta, so it will change the sign here. How? Because cos अगर नेगेटिव एंगल पर लगता है तो वो क्या बन जाता है, cos theta. देन साइन अगर नेगेटिव पर लगता है तो माइनस साइन थीटा, राइट? यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां पर नेगेटिव. ओके, नाउ रिप्लेस आयोटा विद माइनस आयोटा. देन x माइनस आयोटा y कम्स इक्वल्स टू r इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. वहां पर हमने कहा x प्लस आयोटा की वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहां पर हमने कहा x माइनस आयोटा y की वैल्यू कितनी बनेगी, r कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हियर x माइनस आयोटा y को हम लिख सकते हैं r सिस माइनस थीटा. रूल्स आर x प्लस आयोटा y r cos theta plus iota sin theta, it is equal to cis theta. It is a polar form. If you are taking this value, then x minus iota y is equal to r cis minus theta. If z equal to r cis theta, then conjugate of z, right? Conjugate का मतलब होता है जहां पर आयोटा होता है वहां पर माइनस आयोटा लगा दो, राइट? रिप्लेस आयोटा विद माइनस आयोटा. तो अगर मेरे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो यहां पर cos थीटा क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा. एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिस ऑफ माइनस थीटा, राइट? सो दैट्स व्हाई कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल आएगा, आर सिस माइनस थीटा. नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z हमने स्टडी किया, दिस इज इक्वल टू थीटा, जो भी एंगल होता है. और अगर इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव माइनस थीटा, राइट? नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार अगर ऐड किया जाए तो इट इक्वल टू जीरो. थीटा में माइनस थीटा ऐड करोगे तो कितना बनेगा, जीरो. नाउ algorithm to convert a complex number into polar form. How to convert a number? If z equal to x plus iota y, a complex number. Now z belongs to q1 or q2 or q3 or q4, right? Quadrant 1 में, 2 में, 3 में या 4 में हो सकता है. So now अल्फा कम्स इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था, इट इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x, राइट? tan इनवर्स ऑफ y by x. हाउ इट कम्स, दैट अगर आप क्या कर रहे हैं, साइन हमने लिया थीटा, इट इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, y. cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x डिवाइडेड, तो इट विल कम tan थीटा इज इक्वल टू y by x. देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, राइट? सो दिस इज हियर रिटन, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x. नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू थीटा इज फाउंड from the diagram. Now this is the diagram. We have x-axis and y-axis, a quadrant or you can say argand plane. Z belongs to, let's consider first quadrant. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा, राइट? सेम एज इट इज. नाउ इफ वी हैव सेकेंड क्वाड्रेंट तो आपके पास जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा. जो भी एंगल होगा पाई में से माइनस करके देंगे, राइट? नाउ थर्ड इज, इफ वी हैव हियर थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज अल्फा माइनस पाई, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा माइनस पाई. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा. तो सीधी सी बात है, एक बार अल्फा होगा तो नीचे जाओगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा. यहां पर पाई माइनस अल्फा है, नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अल्फा माइनस पाई. नाउ if theta is known from the figure, now r equal to modulus of z equal to under root of x square plus y square. Modulus of or amplitude form is x plus iota y equal to r cis theta. For example, if we have minus 1 minus iota in the polar form, right? We need to write. So how to write? It equal to x plus iota y. Z of x y minus 1 minus 1. माइनस माइनस कौन सा होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव. नाउ आर कम्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
वैल्यूज पुट कर देते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, इट इज 1 + 1 2, 2 under root, right? Now alpha we say tan inverse of y by x. Let's divide them. -1 it is equals to pi by 4. अभी हमने सीखा कि that if we want to find out theta, which is the amplitude, we need to find out how? By using a formula alpha minus pi. उसमें क्या था? pi minus alpha, second quadrant. नीचे वाले में नेगेटिव हो जाएगा तो क्या आएगा? अल्फा माइनस पाई. ओके, टू चेंज द क्वाड्रेंट. So it is pi by 4 minus pi, which is equals to -3 pi by 4, which is the amplitude here, right? So answer is r cis theta. R is √2, right? Cis theta is -3 pi by 4. Okay, now Euler formula, it is here cos theta plus iota sin theta. It can be further written as cos theta plus iota sin theta equal to e to the power iota theta. This is Euler form, okay, in the form of exponential. It is known as Euler formula. Deduction from Euler's formula. We have cos theta plus iota sin theta equal to e iota theta. Replace iota with the minus iota, it will be e power minus iota theta, right? Now cos theta plus iota sin theta, it is e iota theta, and this is minus iota theta. We have here 1 by cos of iota sin theta, it is equals to 1 by, इसकी वैल्यू हमारे पास है e to the power iota theta. So upside it will be e minus iota theta. Now this will be cos theta minus iota sin theta, means they are reciprocal to each other, right? So from here 1 by cis theta is equal to cis of minus theta, right? Now cis theta into cis minus phi, अगर एंगल को चेंज कर दें, सो इट इज e iota theta, e iota phi. कंबाइन इट, वी से e iota, जब पावर्स होती है तो ऐड हो जाती हैं, तो आयोटा थीटा में क्या ऐड करोगे? आयोटा फाई, आयोटा कॉमन, थीटा प्लस फाई. सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? सिस ऑफ थीटा प्लस फाई, विच इज इक्वल्स टू here it is equals to cis of theta plus 5, right? अगर आपके पास कोई भी दो मल्टीप्लीकेशन है तो आप एंगल्स को ऐड कर सकते हो, right? So now next is cis theta by cis phi. अब आप देख सकते हो e की पावर iota theta by e to the power iota phi. Add them e iota, क्योंकि डिवीजन में तो सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन में होता तो ऐड हो जाता, तो iota of theta minus phi, which is cis of theta minus phi. So division of this is cis of theta minus phi. Now z in a modulus amplitude form is r cis theta, which is equals to r e iota theta. We get conjugate, that is r e minus iota theta. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जहां पर iota होगा वहां से minus iota बन जाता है. Thus if we add the amplitude we get 0. Theta minus theta is equal to 0. So amplitude of z plus amplitude of z bar equals to 0. Now if we are saying z1 r1 cis theta 1, तो it is equal to r1, यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो आयोटा थीटा 1 हो जाएगी. देन z2 वैल्यू क्या बन जाएगी पावर में? आयोटा थीटा 2. नाउ z1 into z2, multiply these two, we get here r1 r2 e iota theta 1 plus e iota theta 2, iota common, theta 1 plus theta 2. Now amplitude of z1 z2 is equal to, यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी? theta 1 plus theta 2, right? Means amplitude of z1 plus amplitude of z2. From here we say multiplication of 2 is equal to amplitude of z1 plus amplitude of z2. Now if we have two numbers in division, it is e iota theta 1 minus theta 2. So the value comes equals to theta 1 minus theta 2, right? Amplitude of z1 minus amplitude of z2. Again remember, अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगी एम्पलीट्यूड्स की, राइट, तो आप क्या करेंगे? उनको सेपरेट कर सकते हैं एडिशन से, और अगर डिवीजन होगी तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? Now easily we can also get here amplitude of z to the power n is equal to n amplitude of z, right? Now let's understand some MCQs. If z is x plus iota y,
we can find it is r cos theta plus iota sin theta, right? Which of the following is true? Here we have x plus iota y r cis theta is equal to x minus iota y r cis minus theta. Yes, this is all these values are true. Okay. Now, by Euler formula, we derive cos theta plus iota sin theta. It can be e to the power iota theta, right? Which of the following is true here? Cis alpha into cis beta. It is cis of alpha plus beta. It is right. This is also right. Second is also right. And third is also right. So all of the above are true. So by this we have completed our lecture on polar form and Euler form. If you like the video, please press the like button and share it with your friends. And for the upcoming videos, please wait. Tata, bye bye. Take care.